मैं जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ के घर से बहुत दूर। अब कभी नहीं आऊंगा तुम दोनों के घर। ऐसा मत बोलो बाबू, घर चलो, मम्मी ने तुम्हें बुलाया है। किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है तो तुम दोनों मेरे भाई बहन नहीं हो, और ना ही मम्मी मेरी मम्मी है। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। अरे रुको चिंटू बाबू को, वो भाग रहा है। अरे रुक जा बाबू, मैंने डीजे लगाया है घर पर, और चिंकी एक बड़ा आइसक्रीम वाला केक लेकर आई है तुम्हारे बर्थडे के लिए। हम सब मिलकर तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देना चाहते थे। अरे रुक जाओ, चलो अपना बर्थडे मना लो केक काट कर। चुप करो और मुझे जाने दो, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मेरा आज बर्थडे मनाने के लिए कोई नहीं है। अरे रो मत बाबू, रुक जाओ और घर चल, हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, चल मेरे साथ। हम तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। छोड़ दो मुझे, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम दुश्मन हो मेरी। बड़ा भाग रहा था तू, अब ले चलो मम्मी इसे घर। मुझे वो पूरा केक खाना है, मेरे मुंह में कब से पानी आ रहा है। अरे बाबू, मैं चिंटू और चिंकी ने मिलकर घर में एक बड़ा केक रखा है, और डीजे भी लगाया है तुम्हारे लिए। सच में? तो दौड़ के चलो। हाँ, मैंने ढेर सारा रसगुल्ला भी बनाया है तुम्हारे लिए। मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा बड़ा सा केक काट कर। दौड़ो चिंटू और चिंकी। वाह वाह वाह, ये हरा वाला आइसक्रीम तो उस लाल वाले आइसक्रीम से भी ज्यादा मीठा है। बड़ा मजा आ रहा है खाने में इसे। अरे तोड़ी के, वो तो वही लड़का है जो मुझसे मेरा लाल वाला आइसक्रीम छीनने आया था। और तेज दौड़ो मम्मी, चिंटू और चिंकी, मेरे आइसक्रीम वाले केक को कोई घर से चुरा ले जाएगा तो मैं अपना बर्थडे भी नहीं मना पाऊंगा आज। और तेज दौड़ो तुम सब। अच्छा, तो उस लड़के का बर्थडे है आज, और वो आइसक्रीम वाला केक काट कर खाने जा रहा है उसे। मैं भी चलता हूँ आइसक्रीम वाले केक को खाने, पूरा केक ही लेकर भाग जाऊंगा मैं। चल अब नीचे उतर बाबू, हम घर आ गए। चलो अब सब घर के अंदर, मेरा बर्थडे मनाते हैं केक काट कर। बाबू तू ही घर का दरवाजा खोल, तेरा बर्थडे है ना। हाँ तू ठीक कह रहा है चिंटू, मैं खोलता हूँ दरवाजे को। अरे बाप रे, मम्मी तूने इतना सारा चीज घर में लगाया है, वो भी मेरे लिए। डीजे है, रसगुल्ला है, और गुब्बारा भी है, और एक बड़ा सा केक भी है। ये सब तुम्हारे लिए है मेरे प्यारे बाबू। अब चलो अपना बर्थडे मनाओ केक को काट कर। अरे बाबू, अब तू क्यों रोने लगा, वो भी अपने बर्थडे पर। मैं तुम सबको बहुत गाली दिया हूँ भर भर के। क्या? मैंने सोचा कि तुम सबको मेरा बर्थडे याद नहीं है, लेकिन तुम सब तो देवता निकले रे दादा। अरे बाप रे, इतना बड़ा केक, आज तो मजा आ जाएगा। मैं वो पूरा केक लेकर भाग जाऊंगा, और वो कमीना लड़का फिर अपना बर्थडे नहीं मना पाएगा। अरे रोना धोना बंद कर बाबू, चल जल्दी से केक को काट कर अपना बर्थडे मना। मुझे वो पूरा केक खाना है। हाँ काटता हूँ। पहले केक काटने वाला तो लेकर आओ। रुको मैं लेकर आती हूँ। ये ले बाबू, अब काट इससे केक को। अब मैं जैसे ही केक काटूंगा तुम सब गुब्बारे को फोड़ना, ठीक है? हाँ चल काट, मुझे तो बस केक खाना है। बस यही मौका है, केक को लेकर भाग जाता हूँ। हैप्पी बर्थडे वाला गीत तो गाओ चिंटू, चिंकी और मम्मी, तभी मैं काटूंगा केक को। जल्दी से काट केक को, नहीं तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। ठीक है काटता हूँ। अब गोबर काट के मना अपना बर्थडे। अरे मम्मी रे, वो कमीनी बिल्ली मेरा केक लेकर भाग रही है, जल्दी पकड़ो उसे। अब मैं कैसे खाऊंगा केक? वो कमीनी बिल्ली लेकर भाग गई। बाबू चला गया उस बिल्ली को पकड़ने के लिए। अब तुम दोनों भी जाओ और उस बिल्ली से केक छीन कर लाओ। जल्दी चल चिंटू। अबे वो बिल्ली, मेरा बर्थडे वाला केक दे दे मुझे। गुड़िया ले ले कमीना लड़का, अब मैं ये पूरा केक खा जाऊंगा।
If you're over 60, there's one sleeping position you should avoid because it may be silently straining your heart every night. It can restrict your breathing, reduce blood flow, and might be the hidden reason you wake up tired, dizzy, or short of breath. Most people blame age, but in reality, the way your body rests during sleep plays a much bigger role than you'd expect. A small shift in position can completely change the way your heart and lungs function overnight. As we get older, our bodies lose the ability to recover as easily as before. Joints stiffen, circulation slows, and the heart has to work harder just to maintain normal function. The sleeping positions that might have been harmless in your 40s or 50s can start putting serious pressure on your cardiovascular system after 60. Yet millions of seniors unknowingly sleep in postures that make everything worse. Think about it. When you lie down at night, you expect your body to rest. But if your chest is compressed, oxygen intake drops, or your heart is forced to pump harder just to circulate blood, then you're not resting at all. You're stressing your organs for hours without realizing it. And that stress builds up night after night. Every sleeping position, left side, right side, back, or stomach, has certain pros and cons. But once you cross 60, those effects get amplified. The spine isn't as flexible, the lungs don't expand as easily, and circulation can get blocked depending on how your weight is distributed. Most people never realize how directly sleep posture affects heart function. Some positions compress major arteries, others restrict diaphragmatic breathing, and some worsen acid reflux, which indirectly increases the load on the heart. Over time, poor sleep posture isn't just connected to fatigue, it's linked to a higher risk of hypertension, atrial fibrillation, and even heart failure. What makes this even more concerning is that many people sleep through the night without waking, even if their oxygen saturation drops. They don't feel the episodes, but their heart feels everything. Even a small drop in oxygen can force the heart to beat harder for hours. It's like asking your heart to run a marathon in the middle of the night while you're unaware. This is why sleep position after 60 becomes more than a comfort choice. It becomes a health decision. You're managing pressure on your organs, optimizing airflow, maintaining proper circulation, and protecting your heart. Ignoring this can lead to tired mornings, irregular heartbeat, shortness of breath, and long-term cardiovascular issues. The good news is that a simple shift in sleeping posture can dramatically reduce heart strain and improve overall recovery. But which position is the most harmful? Studies consistently show that sleeping flat on your back, the supine position, is the worst for seniors. It may feel natural, but after 60, this posture can quietly become dangerous. When you lie on your back, gravity pulls your tongue and soft tissues backward. This narrows the airway and increases the likelihood of sleep apnea. Sleep apnea isn't just snoring. It's a cycle of oxygen, drops and sudden jolts that force your heart into emergency mode repeatedly. Blood pressure spikes, heart rhythm becomes irregular, and stress hormones surge over and over again. For seniors, whose lungs and blood vessels are already less elastic, the impact is even more severe. Back sleeping also worsens acid reflux, which irritates the airways and makes breathing harder. This further increases the workload on the heart. If you wake up with a dry mouth, pounding heart, or if your partner notices pauses in your breathing, this might be the hidden cause. Thankfully, fixing it doesn't require medication or special equipment. It starts with simply changing your position. Because for most people, especially seniors with heart concerns, avoiding the back sleeping posture can be a game changer. If sleeping on your back creates so much strain on the heart, then what is the safest and most supportive position for people over 60? Most sleep in heart. Health experts agree that sleeping on your left side is one of the best choices, especially for older adults. It may seem like a small adjustment, but it creates a powerful combination of better circulation, easier breathing, and reduced pressure on the heart. When you sleep on your left side, your heart sits slightly higher than the rest of your organs. Gravity helps reduce the pressure on the heart and allows blood to circulate more efficiently. The aorta, which carries oxygen-rich blood from the heart to the body, curves naturally to the left. This means the heart doesn't have to push against as much resistance at night. Less resistance means less strain, and less strain means deeper, more restorative sleep. Sleeping on your left side also lets your lungs expand more comfortably. This increases airflow and reduces the chance of shallow breathing or apnea episodes.
For seniors who sometimes struggle with lung capacity or snoring, just this one shift can make mornings feel clearer and more energetic. Another major benefit is reduced acid reflux. Because the stomach is positioned on the left side of the body, gravity keeps stomach acid from flowing back upward. With fewer reflux episodes, the nervous system stays calmer and the heart stays under less stress. There's another unexpected advantage: improved lymphatic drainage. Your lymphatic system is responsible for clearing toxins and waste from your organs. When you sleep on your left side, this natural detox process works more efficiently. For older adults whose systems slow down with age, this can make a noticeable difference in how refreshed they feel by morning. Sleeping on the right side, on the other hand, can slightly compress the vena cava, the large vein that returns blood to the heart. This isn't dangerous for everyone, but for some people with heart issues or sensitivity, it can make palpitations feel more noticeable. Now, you don't need to stay perfectly on your left side for 8 hours straight. What matters is starting in that position and maintaining it comfortably for most of the night. Using a body pillow can help keep your body aligned and prevent rolling over.